From Bangalore, alias Raju. Thank you very much being here, and I'm with my team, producer Manjunath Karma, and Kiran, my director Deepak, and my co-star Brudula, and all my executive producer, and media friends. Thank you very much. Thank you very much for coming. This is actually in Kannada my sixth movie. First movie is Raju, first time Raju. After that, my name is famous as Raju only. Second movie is Raju Kannada medium. We dubbed in Hindi also. This is my second attempt in Hindi. I got very good response in Hindi for Raju Kannada medium. I hope you guys enjoy this movie also. So thank you very much. I need your love and support for this movie, Raju James Bond. And today, we released our one song, romantic song here only first actually. After the next week we're releasing in Bangalore. February 14th is our movie releasing, Hindi and Kannada. Please bless me and support me. Thank you so much. After that we have a female lead, our debutant, Miss Mridula as Vidya. नमस्ते सब लोग, आप सब लोग आने के लिए धन्यवाद। और कन्नड़ा मूवी हम लोग हिंदी में रिलीज कर रहे हैं करके जब सर ने बताया था, मुझे बहुत खुशी हुई। मेरी पहली हिंदी मूवी है, ऑब्वियसली बहुत खुशी हुई। और पहला रोमांटिक सॉन्ग हम लोगों ने वीडियो सॉन्ग इधर लॉन्च किया और खुशी हुई। और थैंक यू सो मच, सब लोग आके हम लोग को ब्लेस कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। और फरवरी 14th को हमारा मूवी रिलीज है। सब लोग आके सपोर्ट करके देखिए मूवी। थैंक यू। Then we have our producers, please sir. Hi, everyone, namaskara. Very good evening to you all, and सब लोग को नमस्कार। मेरा नाम किरण बरतूर and मैं one of the co-producer of the movie. मेरा हिंदी भी उतना अच्छा नहीं है, मगर मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ हिंदी में ही बात करने के लिए। So ये सब हिंदी में रिलीज करने का प्लान मेरा दोस्त और मेरा co-producer या main producer है मंजुनाथ का प्लान था। सो आज हम सब आपके पास सामने हैं। सो ये प्रेस मीट अरेंज करने के लिए आई वुड थैंक मिस्टर चरण, थैंक यू वेरी मच ब्रदर। एंड आप सब लोग आने के लिए को भी धन्यवाद है। और ये सिनेमा मैं बहुत खुशी से और गर्व से बता सकता हूँ कि ये पूरा कोस्टर्स है ना, ये पहले राजू के बारे में बता देंगे। राजू he has given इसका करियर में तो बहुत अच्छा मूवीज दिया है और वेरी सक्सेसफुल मूवीज दिया है। और इसका 3 या 4 सिनेमास इज अ सुपर हिट। और प्रॉबेबली अभी आप ये नेक्स्ट सिनेमा ये भी सुपर हिट हो जाएगा, क्योंकि ये ब्रांड राजू है ना कंटिन्यू हो रहा है। और इसका राजू इज वेरी लकी फॉर हिम एंड लकी फॉर अस आल्सो। सो ये सिनेमा का अभी को स्टार का बारे में बताना है तो ये हमारा सब को स्टार्स है ना, ये हमारा साउथ का कन्नड़ा सिनेमा का टॉप को स्टार्स है, वेरी बिग को स्टार्स एक्चुअली। और सब लोग हमारे सिनेमा में काम किया है। और हमने 15 या 20 दिन लंदन में शूट किया और 2 सॉन्ग शूट किया है। और आपको संजीत हेगड़े पता होगा, संजीत हेगड़े अभी वो सिंगर है, वो साउथ इंडिया से हमारा बैंगलोर से। अभी सोनू निगम जिसके साथ भी एक सॉन्ग रिकॉर्ड किया था। और ब्रह्मास्त्र में केसरिया सॉन्ग वो कन्नड़ा वर्जन वही गाना वही गाया था। सो वो भी इसमें गाया है। और एक सिनेमा एक कॉमेडी और एक थ्रिलर भी है और एक सोसाइटी को भी एक मैसेज भी है। So what I would personally feel is, this cannot be branded as one language movie. ये हम ऐसा नहीं ब्रांड कर सकता है कि साउथ इंडिया के, इसलिए क्या है कि मेरा मंजुनाथ ने मेरा दोस्त को क्या किया है कि चलो ये काम करेंगे। हम दूसरे लैंग्वेजेस में तो नहीं,
हिंदी में तो ट्राई करेंगे क्योंकि इट कैन बी टेकन इन हिंदी ऑल्सो। ऐसा बॉलीवुड नहीं है मगर नॉर्थ इंडिया, सो बेसिकली इट कैन बी टेकन नॉर्थ इंडिया। सो हमने ट्राई कर रहा है, कोशिश कर रहा है। आप सब लोग, मीडिया लोग, थैंक यू सो मच मीडिया दोस्त लोग, आप भाई जो ऐसा है आपका ही, इट्स ओनली रन्स बिकॉज ऑफ यू ऑल पीपल। आप सब लोग का सपोर्ट चाहिए, प्लीज सपोर्ट करो। और ये सिनेमा हिट होने के बाद हम प्रॉमिस करेंगे अगले बार आएंगे, इधर ही और एक पिक्चर बनाएंगे और इधर से हम साउथ पे जाएंगे। हाँ so please support us and what else? You guys have any questions? Okay, fine then. Thank you. बाद में बात कर देंगे। Thank you so much. And I will give it to Manjunath Vishwakarma. Thank you. Thank you so much. Good evening, everyone. Namaskar. First of all, I want to thank all the media people and the supporter of for this movie. I want to heartily thanks and welcome to this event. ये जो मूवी हम लोग पहले हमारा ओन लैंग्वेज में कन्नड़ा में बनाया था, जब दीपक और मेरा पार्टनर किरण और राजू ने मिलके मुझे एक स्टोरी सुनाया था अभी, तो अच्छा था। एंड देन हम लोगों ने सोचा इसको अच्छा बनाएंगे बोल के कन्नड़ा में एक अच्छा मूवी हमने बना दिया। और दो सॉन्ग जो है ना हम लोग लंदन में शूट किया, थोड़ा सीन भी लंदन में शूट किया हुआ है। उसके बाद हम लोगों ने सोचा इसको जो है ना हिंदी में भी करेंगे बोल के। हिंदी का मतलब देन वी कैन डिस्ट्रीब्यूट अक्रॉस इंडिया एंड ऑल्सो वर्ल्ड वाइड भी जा सकते हैं, सबको दिखा सकते हैं बोल के। एंड वी हैव सम प्लान्स फॉर द फ्यूचर में। अभी कर्मा ब्रोस प्रोडक्शन जो लंदन का यूनिट है, तो हम लोग प्लान कर रहे हैं अलग मूवी जो है, नेक्स्ट मूवी जो है हम लोग बॉलीवुड से कुछ मूवी बनाने के लिए और पैन इंडिया भी बनाने के लिए प्लान है हमारा। तो सोचे यही मूवी को पहले हिंदी में करके देखें और कैसा रिस्पॉन्स है, हम लोग का एक्सपीरियंस कैसा है, तो बोल के हम लोगों ने ये मूवी हिंदी में भी किया। एंड मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, ये मूवी एक कंप्लीट पैकेज है, लव स्टोरी है, थ्रिलर भी है, एक्शन भी है। और दोनों जो है ना, राजू है बहुत अच्छा काम किया इस मूवी में, और हमारा एक्ट्रेस भी है वो भी बहुत अच्छा काम किया हुआ। एंड डायरेक्टर ने जो इनके साथ जो इनका टैलेंट जो निकाला है ना, बहुत अच्छा मूवी से निकाला है। तो आई शुड डेफिनेटली थैंक हिम एंड अप्रिशिएट हिम दैट फॉर हिज हार्ड वर्क एंड इस मूवी में जो काम किया, आई शुड डेफिनेटली थैंक दीपक। और दीपक के पास और एक स्क्रिप्ट भी है, बहुत अच्छा शूट करने वाला, लंदन में शूट करने के लिए, और बॉलीवुड का जो बड़े एक्टर्स को डाल के करने के लिए एक प्रोजेक्ट भी है, हम लोग वो करने के लिए प्लान कर रहा है। तो शायद इस साल में भी हम लोग उसको शुरू करने के लिए सोच रहे हैं। एंड अदर पार्टीज हमारा मूवी में एक आइटम सॉन्ग है, हम लोग सोच रहे थे किसको ले बोल के। देन वी गॉट नेम अक्षदा पटेल। We have Miss Akshada with us, guys. Please एक तालियां हो जाए उनके लिए। She is a Mumbai girl and she has done beautifully in this movie. Definitely, next time we'll release her song as well. बहुत अच्छा काम किया इसने। So definitely, I thank अक्षदा पटेल। तो that's it. हम लोग मेहनत किए हुए हैं, but I need all your support from the Bollywood. And then please support our team and thank you all. Thank you Mr. Vishwakarma, thank you Mr. Badu. एक बात भूल दिया मैंने अक्षदा पटेल के बारे में बताने के लिए। I'm sorry. She has done a wonderful job. Wonderful job, and she's so much dedicated. I pray to God that she get back whatever she was before, and she do the best of the best, because she has given her whole means heart and soul for that song, and we will release that song too, and not now, probably in the later stage. बहुत अच्छा काम किया है उसने। Thank you so much, and I wish you all the best and good luck. सॉरी, एक बात बोलना भूल गया था मैंने। इधर के हिंदी को करने के लिए जो मेरे साथ सपोर्ट दिया है ना, राजीव है, he is the director of quite a few movies in Hindi, but he has helped me to complete this project in Hindi. So I thank him, and I want to be part of his future things. So thanks. And Karan is our Charan, if you can come forward.
He's our coordinator in Mumbai for everything, you know, like I thank Charan also for organizing all this and coordinating. Thank you, Charan. And thank you. Thank you so much, sir. And I'll come back to our director, the captain of the ship, Mr. Deepak Madhuvanandi. Thank you. So, good evening everyone, and thanks for coming. First of all, Happy New Year to all. This is the only drawback of speaking at the last, because there won't be any left thing to speak. मैंने समझा कि प्रोड्यूसर सर ने वो अक्षता के बारे में छोड़ दिया, लाइक मैं बात करूँगा, वो भी बात करेगा, और राजू को पकड़ा, राजू के बारे में मैं बात करूँगा, सर ने वो भी मेमोरी करके राजू के बारे में भी बात कर दिया. So really I don't know what to speak now. So पहले coming to the dubbed version, see we dubbed in like April में I guess here in Bombay में. वो हमारा राजू है ना, वो हीरो का संकेत मात्रे ने वॉइस दिया, वॉइस ओवर संकेत मात्रे वो gives like for Tamil Dalpati Vijay and Allu Arjun. So he gave the voice to Raju character. He has done a fabulous job. The entire movie has done a really fabulous job. And the villain, the Shahbaz Khan, the senior artist of Bollywood, the veteran actor, he gave the voice to the villain. So for that entire process, Mr. राजीव ने बहुत हेल्प किया हमको, वो स्क्रिप्ट करने में और वो वॉइस को ट्रांसलेशन करने में और डबिंग आर्टिस्ट को अरेंज करने में. सो थैंक यू राजीव, इट वाज ए वेरी नाइस वर्किंग विथ यू. और मुझको ये बॉम्बे एक थोड़ा नॉस्टैल्जिया मोमेंट है लाइक फिल्म के हिसाब से. 2008 में मैं सुनील शेट्टी के पॉपकॉर्न मोशन पिक्चर्स में असिस्टेंट डायरेक्टर था एक प्रोजेक्ट में. उसके बाद मैं बैंगलोर वापस चला गया. सो 16 इयर्स अगेन फिल्म के सिलसिले में डायरेक्टर बन के बॉम्बे में आना पड़ा. सो आई होप द बॉम्बे वेलकम्स मी in a good way through this Raju James Bond. So it was very overwhelming listening to your like cheering for motion poster. Thanks for that. बहुत अच्छा लगा वो सुन के पीछे से वो आवाज. So we feel so good like what you say like for the art people, the cheering, the claps, the sound that only makes us so good about it. एंड प्रोड्यूसर्स के बारे में बात किया तो आप देख सकते हैं. सो विजुअली कोई भी इन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है. सो इट हैज कम आउट सो वेल. सो यू कैन विटनेस दैट इन बोथ मोशन पोस्टर एज वेल एज द सॉन्ग थीम. एंड एज गुरुनंदन, आवर सो कॉल्ड alias Raju, the famous brand name Raju. So I am sure it will be a hat trick as our anchor Ishita said. So it will be a hat trick from our Raju. So he has done a very fabulous job. So he has done action, song and all. It's a very fabulously has done. And our debutant Mridula as well. So even if you watch the film, you won't feel like she is a debutant. So she has done a very good job. And coming to my technicians, like Anup Sarin has done the music. All 4 songs has composed very nicely, and even the background score. So the visuals were like by Manohar Joshi. They are like top technicians in Bangalore. And in Hindi, the music was arranged by B. Show. So even he has done a good job. This song is sung by Altamash Faridi. Yeah, in February 14th we are releasing cinema, and over the period we are releasing Akshata's song. Like that is one whole dance number. Like you can't sit on a chair simply. The whole 4 minutes it is like that foot tapping and that dance number. So she has pulled it off very nicely. Very nice, Akshata. Like you have to watch it actually. It is full of energy. Yeah, and it has full of energy, that song. So and we are going to release the trailer as well. So one by one
we are gonna meet oftenly. So February 14th is our cinema release. We are releasing parallelly in Kannada and Hindi as well on February 14th. And this song is gonna release on 11th morning in Kannada and in Hindi as well. And thank you. If you have any questions, you can. And one second, before that, Akshata will have few words about our film and team. Namaste everyone, thank you so much for coming. I'm very grateful to be on this song, and I really like this song and the song energy. Of course I have put so much energy and so much goodness of the song, but song, if you hear the song, it is amazing. You can't sit on chair and just listen the song. You have to dance on this song. There's something like that. And I was really Kumar sir, Kiran sir, the hero and the heroine. We had a great time while we are shooting. We shot, where we shot exactly? I forgot. Sandur in Kannada. It was amazing. The location was nice. We had a night shooting for 3 days. It was amazing, and I'm really looking forward to see the song. Thank you everyone. So now, Thank you so much. now we are opening the house for question answers, and we all welcome you to Bombay. And I'm passing on the mic to. Hi, well, firstly, my name is Guru from Beyond Bollywood. Welcome to you all, everybody. I have two questions for Guru Nandan. Firstly, obviously, you're still very young in your career, and Touchwood, I think as they have said that you've given plenty of things, and this name has stuck with you, Raju. But do you plan to have this name for every film of yours in future? So, no, not exactly. Actually, but this year I have 3 movies. I'm planning to do a Hindi version also. So not Raju is no more Raju. This is maybe Raju James Bond is the last, as a Raju is the last name. Okay, and I was just reading about you. There was the story that I think you, as a child, you ran away to Bombay to become an actor. Yeah, actually. So, I mean, if you were in class 8, you might have been just like, what, 12 or 13 years old. This, not Mumbai, so Bangalore. Okay. So my hometown is from Bangalore, so 250 kilometers, Chikmagalur. So 9th standard I came to Bangalore, so becoming an actor. Can you tell about that time, if you can recall, like? No, it's a whole story. Because I'm studying, that is my acting is my childhood dream. When 9th standard, I came randomly. I came to Bangalore. Then I gone back to Chikmagalur. Again, after some time, I came to Bangalore, acted in few serials, acted in small roles, movies also. Then I got first rank Raju's first movie that became hit. Then you know the story. As a child, when you ran away from home, Yeah. to Bangalore, and can you recall something about that experience? Who knew me? And because it's quite a dangerous thing for a child to run away from home. Yeah, that is very difficult actually. That time, because I wanted to become an actor. That time also because I am watching all Kannada movies, and I wanted to become an actor. Randomly, I came to Bangalore. Then I didn't get any chance. That time. Then my parents are searching actually. Then I come back to Chikmagalur. I continue my studies. Thank you. Thank you. All the best. Thank you. This is for destiny, guys. This is what made him a star, a shining star, right? Thank you. Hi, you're on this side. Hi, this is Astha from Awesome TV. First of all, congratulations. I am really liking everything what's shown on the screen. My question goes out to Mridula. What was it like working with Raju James Bond, and how excited or nervous are you for the Hindi version? Thank you for the question. It was really exciting to work with Raju and then our director Deepak sir. The way he, he never thought, made me feel that I am new. So that's the way I like about the whole team. Just not,
about the newness. It's like जिस तरह उन्होंने मुझे प्यार दिया और मुझे अपना समझ के जो सिखाया, जो भी सिखाया है, लाइक ऑफ कोर्स हिंदी में जो जब डब कर रहे थे तब भी बहुत खुशी होती है मुझे कि मेरा मूवी हिंदी में भी डब हो रहा है करके, और यस, थैंक यू। My follow-up question is to Gurunandan sir. You tell me about your excitement. That how is it? I'm sorry, you're very excited. I'm so happy also because my Raju James Bond Hindi version is released in Mumbai. So I'm very excited. Thank you. Hi Gurunandan sir, this is Surya from Bollywood Crazies. You are coming from Kannada film industry, and I'm happy that you are releasing in a Hindi version also. It's a big day today, you know. Namayash birthday is there, like so. Of course, everyone is inspired by him, and Kannada industry has come a long way. So, is there some pressure on you also to make a pan-India hit or give a pan-India hit after KGF, the big films, Kantara, and now Raju James Bond? What do you think? Actually, we try to give a good product. Okay, hit and flop, everything is in your hand. Okay, so movie is very good. You should watch. You should make a hit. One more thing is that you have played the Raju character earlier also in your films. So is this film has already released in Kannada and you are releasing right now, or it is simultaneously releasing? Simultaneously releasing February 14th. Okay. Like Kannada and Hindi. Okay. I have one question to director Deepak sir. Yeah. दीपक सर, आपने कहा कि आप इसके पहले भी मुंबई आ चुके हैं, कुछ साल आपने काम किया स्टिंट, उसके बाद वापस आप होम टाउन गए, तो वो जाने का सफर क्यों आपने चुना वापस से, फिर वहाँ से एक नया स्टार्ट किया, ये क्यों आखिर, ये थोड़ा सा इस बारे में अगर बता सके आप? नो, आज का दीपक बता तो नहीं जाता। उस समय लाइक I was with my I was with my director. That time I was an assistant director. So we were supposed to do one film in Bollywood, like in association with Sunishiti's promotion, which as I said. So I was here for 4 months for that project. Then we did some pre-production and all. Then unfortunately that project didn't take off. So 4 months I was at Popcorn Motion Pictures and we were staying in Goregaon. So the office was in Char Bungalow. So that time, that's the first exposure for me to the Hindi industry. But that time I was so into my director, and as he went, so even I went with him back to the Bangalore and we started doing Kannada films and all. As I told, in today's Deepak I wouldn't have gone back to the Bangalore. So whether it's Shadu Bhugulia and Akshit Kumar, they are also big celebrities. We want them to also come to Mumbai. Are you planning to make them come to Mumbai with Kriya launch or some other? Yeah, definitely we do have plans. So we have to see their schedules, because you know that they are so much busy artists in like multi-language they will be doing the films. So it's so hard to get them on board all together. So definitely if that plan is there, if it works out, so it will be great for us. मृदुला जी, आपसे सवाल है, कैसा लगा आपको काम करके हमारे गुरुनंदन सर के साथ, और क्या लगता है हिंदी में फिल्म आने से फिल्म को और एक अच्छा एक्सपोजर मिलेगा और एक फिल्म ज़्यादा बढ़िया तरह से पैन इंडिया चलेगी, क्या कहना है आपका? मुझे बहुत खुशी हुई गुरुजी के साथ काम करके, और ऑफ कोर्स जब हिंदी में रिलीज हो रहा है तो एक्सपेक्टेशंस भी ज़्यादा है, और बहुत बहुत एक्साइटेड भी हूँ मैं, क्योंकि हम लोग हिंदी में डब किया है करके, और मेरा पहला सॉन्ग जो हिंदी में आया है वो भी देख के बहुत खुशी होती है। I have one question for the director, and even others can join in. और बाद में अक्षता से मेरा एक सवाल है. Obviously now है Raju James Bond. So starting with the director, I'm sure you might be a fan of James Bond as well, but
who according to you has played the best Bond character ever? So there is no one else than Dr. Rajkumar. So back in Karnataka, he was the one who played the James Bond at the first time. So even I'm not inspired from any that Hollywood like Pierce Brosnan or the recent Bond actor. So we are so inspired from our own James Bond, like Dr. Rajkumar. So then, like, why name your film have James Bond in your title then? Now that you have to watch the film, why it is James Bond. Now if I tell now that curiosity will be revealed. So will the young cast, would they like to talk about their favorite James Bond? There's definitely no other person than our great Annaur. We all love Mubali, and with all respect we call him Annaur. Annaur means Bade Bhai. So he is Dr. Rajkumar sir. So he is the best, and he will be the one and only James Bond for all of us. And that would be probably, I think, I think all answered right. Yeah, it's all the same. Yeah. Okay, please. Rakshana, my question for you is, आपके लिए एक आइटम सॉन्ग की परिभाषा क्या है? क्या मूल्य होता है उसका एक फिल्म में? Thank you so much for the question. I really like this because item song for me, dancing is for me worship. And when I heard about this item song, when I got this song, I was like, okay, chalo jaate dekhte kya karna hai. When I heard this song and when I saw the moment, the hook step, actually it's just the hook step. It is so amazing when I got the whole song, all the 2 days when we showed the song for night shooting. While going for the 3rd day, I literally had tears in my eye. I was like, I love the song. Please let me know whenever it will be released. So I was so happy to work with Kumar sir, Kiran sir, Deepak sir, and the choreographer. They have actually directed such a well and choreographed such a well in the song, and I love it. Thank you so much. आपको नहीं लगता कि अब शायद समय आ गया है कि हमें, क्योंकि ये सुनने में बड़ा, like personally if you ask me, I don't like the word item, or it should be just song या उस हिसाब से या No, I don't think so. ये सबके देखने का अलग-अलग नजरिया होता है. Okay, so performer and an actress is different. The performer, she is also an actress. It's just that she is doing an item song. So item song is not a bad thing. कि मतलब पूरे मूवी में एक सॉन्ग ही वो होता है जो पूरी मूवी की जान बढ़ा देता है. आपने सबसे हमारे फेमस इंडिया में सबसे हिट कौन है? नूरा फतेही जी. She is so amazing. So उनके लिए she had done so many item songs. तो उनके लिए ऐसा नहीं बोलेंगे कोई कि ये item song क्यों कर रहे हैं. So for me, I have done many item songs in Marathi, Telugu, Tamil, Bollywood. But in the Kannada, I guess this is my 3rd song, and I am always looking forward for the item song. मुझे especially lead से ज़्यादा मुझे ना song करने में अच्छा लगता है. It's like a kick मिलती है. Thank you so much. Thank you. Any more questions? शंकर बहुत बधाई. कुछ जरा सब पूछ रहा है. सर सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर सबको, पूरी टीम को. नाम ही इतने प्यारा है, जेम्स बॉन्ड. नाम से लग रहा है कि मार धार वाले पिक्चर है. पिक्चर की बेसिकली जो थीम मैसेज है, क्या मैसेज आप पिक्चर से देना चाहते हैं? हमारे बॉलीवुड में भी आप लोग क्या मैसेज देना चाहते हैं आप लोग? कोई क्वेश्चन एनीवन कैन आंसर, राइट? फाइन. आप थैंक यू वेरी मच फॉर द क्वेश्चन. आप सिनेमा के बारे में पूछ रहे हैं, मैसेज के बारे में पूछ रहे हैं. एक बेसिकली एक मूवी है, कॉमेडी जॉनर है, एंड सिनेमा का मैसेज है, ये सोशल मैसेज है. एवरीबडी, सब लोग बोलते हैं कि हमारा सिनेमा में एक या कुछ ना कुछ सोशल मैसेज होगा करके. हमारे भी एक एजुकेटेड गरीब लोग का और एजुकेटेड ग्रेजुएट बेसिकली उसका प्रॉब्लम क्या है, और फाइनेंशियल
पैकिंग उसके बारे में तो क्या है करके I love that film. Like, when I watched it, I actually, in fact, I rewrote that in Kannada, the entire film, for one actor. So I don't want to reveal that to you. उस समय में वो था, I was so serious about that film to remake in Kannada. But after that, like, it didn't happen and it went away. There is another question. It is generalized. Anyone can answer that. Like we have seen Telugu industry doing very good. Like we have seen lots of movie doing wonders. हिंदी में डेब्यू होने के बाद भी या फिर ओवरऑल बात कर रहा हूँ मैं. So what the Kannada industry is doing? Like we saw KGF, we saw Kantara. Next what? What are motives? Like क्या vision है मिली for industry का? Why not? देखिए भाई, हम किसी दूसरे सिनेमा को देख के ऐसा नहीं है. हम क्या है कि हमारा सिनेमा फॉर एवरी पर्सन, फॉर एवरी प्रोड्यूसर, फॉर एवरी डायरेक्टर, एक्टर, देयर मूवी इज बिग, ग्रेट फॉर देम. फॉर अस आवर मूवी इज बिग, वेरी बिग. सो वी वांट द मूवी टू रीच टू दैट हाइट. सो हम सबका ड्रीम है वो. बस. Thank you so much. You're welcome. चल रहा है. Questions, anyone? No. Thank you. Just Shivana Sukana. कौन है भाई? ऐसे मत करो यार. Sorry, sir. Sir, father. So is there plan to work with Shivana sir? Director or producers? Director Saboo. Yeah, of course. See, it's like household name. Like if you ask any director in Kannada, nowadays if you ask any Tamil directors also, they say Shivana's name. So even of course in South, anybody, you pick any director, he wants to work with him. Same as me. What is there? So before we wind up, Varun, my question to you is, since you're here in Mumbai to promote the film and it's releasing on the 14th, Raju has been a very super in terminology when it comes to Bollywood films, be it Shah Rukh Khan Saab or Dilip Saab or Raj Kapoor Saab. How proud are you to share the screen name, and what is that what is that you're carrying away back home from Bollywood? Thank you so much for comparing those legends, because Raju is very lucky name actually. Raju only Raja, because first movie only first time Raju in that movie has become so hit. After that everyone calling in Karnataka Raju only. So many people doesn't know my name only, Guru Nandan. Everyone calls Raju only. Everyone are recognizing only Raju only. So Raju is very lucky name for me. Thank you. With blessings. Thank you. Thank you. Done. Yeah. Visual. Before winding up, like we वो stage में हम लोग दिख रहे हैं, so it is evident that we are part of this thing, but behind the camera, like we have Mr. Naidu sir. I just request the whole team to come over here for the group photo, please. Yeah. They both are the very. Okay. Yeah. They both are very backbone, very strong backbone of our our film to happen, and Chengappa So even these three people's effort is among us, and like because of them we are able to pull off like anything we plan accordingly. And from Mumbai we have Charan sir. Please come sir. And Rajiv. Say they both are our Mumbai counterpart. So I use this stage to thank them. Thank you. So we have our song lyric later. Please come on stage like.
Yeah, he has written all the 4 songs for us. Like, thank you. रुको यार इसको दिखा इसको खुश को उसको गुस्सा आया तुमने मुझे दिखाएगा नहीं तुम गुस्सा हो इसके ऊपर वेट एक मिनट सर एक मिनट हाँ रुको डोंट से थैंक्स ना रुको सर थैंक यू बोल देंगे Thank you. Yeah, thank you. हाँ बिल्कुल बिल्कुल आइए मैम जूम करके लोगे ना क्या चाहिए लक्ष्मण भाई जूम करके देख रहे हैं देखो जूम करके साथ में लक्ष्मण चाहिए वो लक्ष्मण चाहिए मैं ऑलरेडी जूम हो गया तुम्हारा अरे फट रहा है फटेगा तुम्हारा नहीं फट रहा है भाई 4K का 4K यार चैंस बॉन्ड यस क्या बात है यस शंकर तू ही जब Can I have one dialogue from the film? Any dialogue just बोल रहा हाँ proudly एक माइक दे रहे हाँ My name is Bond, Raju James Bond. and you ma'am yeah. अरे भाई जैन बनवाते ना बस करना भाई शंकर भाई